Working with conditional constructs. In your daily life, you take various decisions that are based on certain conditions. For example, if it is raining, you will take an umbrella. In the same way, you can incorporate the decision making techniques in the Java programming language also. The decision making technique can be implemented in the Java programs by using the following conditional constructs. First is if else construct and the second is switch construct. Using the if else construct, use if to specify a block of code to be executed if a specified condition is true. If this expression is true, then print this statement. Use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false. If this expression is false, then the else statement, which is not there, is print. Let's take a look. The syntax for the if else construct is if expression statement else statement. If this expression is true, then print this statement. If this expression is not true, then print else statement. In the if else construct statements followed by the if statements will be executed when the expression evaluates to true. However, if expression evaluates to false, statements followed by the else statements will be executed. Both the if construct and the else construct can contain either a single statement or the multiple statements. In the preceding example, you can modify the existing code by using the following code snippet. If jumble word equals user word, jumble word is one variable and the user word is another variable, then the system.out.println you are correct is print. In the preceding code snippet, the if statement compares the textual value of the jumble word and user word references. If both the textual values are same, the message printed will be you are correct. Otherwise, the message printed will be you are incorrect. If this equals to this, then this statement is print. Else, if this statement is not true, then else statement is print. You are incorrect. The syntax of the nested if else construct is if expression line 1, if expression line 2 statement, else statements, else if expression statement, else statement. If this condition is true, then we are going to check this. If this condition is not true, then we are going to directly else statement and check this. If this is true, then we are going to check this, and if this is true, we are going to print this statement, else this statement. If this is not true, we check this expression. If this is true, we print this, else this statement is printed. In the preceding syntax, if line 1 evaluates to true, line 2 gets executed. If line 2 evaluates to true, statements within the if construct gets executed. Otherwise, statement within the else construct gets executed. However, if line 1 evaluates to false, the else construct gets executed. In the else construct, if the line 3 evaluates to true, statement within the if construct gets executed. Otherwise, statements within the else construct get executed.
चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमने एक जावा फाइल बनाई है इफ स्टेटमेंट डॉट जावा करके। उसमें हमारी ये क्लास है इफ स्टेटमेंट। हमने इसमें मेन मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हम इसमें इफ एल्स का यूज़ करेंगे और देखेंगे ये कैसे काम करता है। चलो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 10। इंट a इज इक्वल्स टू 10 टर्मिनेट किया। अब हम इसमें इफ कंडीशन लाएंगे। इफ ये हमारी कंडीशन होगी। इसमें हम इफ यूज़ करेंगे। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println statement is true। statement is true। एल्स और अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स। बंद किया इसका बंद हो गया। अब इसको रन करा के देखेंगे। पहले सेव करेंगे फाइल सेव रन हो रहा है। अब इसमें हमने वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू 10। हमने कंडीशन लगाई अगर a 0 से बड़ा है 10 है 0 से बड़ा है तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी स्टेटमेंट इज ट्रू। देखते हैं। स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो अब हम इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। दूसरा करके देखते हैं। अब हम दूसरा करके देखते हैं जावा क्लास इफ कंडीशन मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ। ये हमारी क्लास है। इसमें मेन मेथड बनाएंगे public static void main string args दो वेरिएबल ले लेते हैं। इंट a इक्वल्स टू 10 इंट b इक्वल्स टू 5 हम लगाएंगे इफ स्टेटमेंट इफ a is greater than b then system dot out dot println and is EAT
else system.out.println 10 is not greater than 5. सेव करके रन करा के देखते हैं। फाइल सेव रन। टेन इज ग्रेटर देन 5 क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू है। अब इसे फॉल्स करके देखते हैं। 10 की जगह पे 5 लिख देते हैं 5 और 5 की जगह पे 10 लिख। अब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सेव ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा ये प्रिंट होगा 10 इज नॉट ग्रेटर देन 5। 10 इज नॉट ग्रेटर देन 5। अब हम इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करके देखते हैं। एक और वेरिएबल ले लेंगे int c इक्वल्स टू 3। if a is greater than b then print this, else if a is greater than b then print a is greater than b, else if b is greater than c, c is greater than b, print c is greater than b. Else system.out.println b is greater. अगर a b से बड़ा है तो ये प्रिंट होगा a इज ग्रेटर देन b। अगर नहीं है तो else पे जाएंगे, else पे if कंडीशन लगा रखे c इज ग्रेटर देन b, देन ये प्रिंट होगा c इज ग्रेटर देन b। और अगर नहीं है तो else पे जाएंगे b इज ग्रेटर। इसको सेव करा के रन करेंगे। b इज ग्रेटर क्यों? a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, b में 10 है, a में 5 है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम इसमें जाएंगे इफ c इज ग्रेटर देन b, c में 3 है, b में 10 है, c इज ग्रेटर देन b, 3 10 से बड़ा है नहीं,
तो हम इसको छोड़ के इस पर जाएंगे, इस पर लिखा है b इज़ ग्रेटर, तो b सबसे बड़ा हो गया, तो ये प्रिंट हुआ b इज़ ग्रेटर।